लेट्स स्टार्ट. सो फिजिकल क्वांटिटी हमने समझा. अब हम चल रहे हैं व्हाट इज अ वेक्टर. और वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में हो, ऑलवेज जब भी आप फिजिक्स पढ़नी शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज जो आपको पढ़ाई जाएगी वो होगी वेक्टर्स. व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इन फिजिक्स मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज दे आर ऑल वेक्टर्स. Velocity, acceleration, displacement, force, all these are vector quantities. अब जब तक आपको वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में समझ में नहीं आ जाएगा हर चीज, तब तक आप इनमें से किसी भी चैप्टर को स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए वेक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है. अब वेक्टर को एक तीर की तरह आप इमेजिन करिए. एक तीर की देयर इज एन एरो विच हैज, जो उसका सामने वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर का हेड. ऐसे ये एक एरो है. दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द टेल ऑफ द वेक्टर. एनी क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंट measured is called a physical quantity. और वेक्टर क्वांटिटी के लिए अभी एक बच्चे ने डेफिनेशन बताई कि एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड and which has direction is called a vector. And I said this is not the complete definition. There is something missing here, and I'll tell you what is missing here. Now just see this. If I have current flowing in a wire which is 20 amperes, it has magnitude. The magnitude of this current is 20 amperes. It has direction. The direction is being showed by this arrow. Now, still current is not a vector. Current is not a vector. Why? Sir, So can I there is tell? something. Yes, please tell. Because it doesn't follow the vector law of addition. Yes, correct. So for the complete definition of what is a vector, any physical quantity which has magnitude, this is a first condition, which has direction, and there is a third condition in addition, and that third condition is very important to understand, and that third condition is it must follow vector algebra. Vector algebra. You know 2 plus 3 is what? 5. These are the three conditions which are extremely important for knowing for a quantity to be a vector. These three parameters need to be satisfied. Current satisfies first two parameters. It doesn't satisfy the third parameter. Therefore, current is not a vector. This is a very good example of showing that despite having magnitude, having direction, still current is not a vector. Not a vector. So for a quantity to be a vector, I means current. That is the symbol for current.